a new episode of Desi Football Banter guys. आज हम लोग के साथ है एसपी एंड डिव AKA NRI गूनर. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैंपियंस लीग में क्या हुआ है. चैंपियंस लीग में यूनाइटेड बाहर हो गया है. I was happy. I told after the game, I was happy with the result. और क्या हुआ उसके साथ में? न्यूकैसल भी आउट हो गया है, मिलान भी आउट. हार्ट ब्रेक फॉर मिलान. PSG बच के निकल गया यार. PSG एंड डॉर्टमंड. अरे बच के क्या, they were one of the bigger teams, तो I would say उनको तो they had to go through. इतना अच्छा नहीं खेले इस बार चैंपियंस लीग में. But ग्रुप स्टेज मतलब but they got through, but for how long? That is my question right now, because PSG are not what as Div says, that team is a gun of a team, but they are not playing like that. No. But they still have enough to, I guess, get through. Knockout stages, man, I don't think they'll get like to maybe semi-final or final. I don't see PSG. them going Yeah, through. if they have a bad but as a not gooner get I actually want to avoid them in the next stage. As a gooner, I want to avoid most of the big names. To be very honest, because we have not been in the competition for so long, na? For so long. So I'll take वो जो छोटा-मोटा Portuguese Lazio. team और Lazio PSV को फिर से भेज दो. No, Lazio भी बड़ा है. Like Lazio finished second यार. Second finish क्या? So I'd rather go with something like Copenhagen. Napoli were at that time Copenhagen. बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. But Copenhagen से याद आया यूनाइटेड का ग्रुप. मेरे को लग रहा था कि लास्ट में गैलाटासराय मतलब ले लेगा करके, बाजी ले लेगा मतलब विथ बेयर्न दोनों क्वालिफाई कर लेंगे, बट वो भी हक दिया यार लास्ट मिनट में. यूनाइटेड फिनिश्ड ऑन 4 पॉइंट्स. डिस्क्लेमर गाइस, ग्लिनलिवे हम लोग का स्पॉन्सर है नहीं. वो एसपी का फेवरेट ड्रिंक है. वो थाईलैंड गया था, वो वहां से खरीद के लेके आया है ड्यूटी फ्री, या फिर पता नहीं कहीं से किसी से मतलब मारपीट करके वो छीन के लेके आया है. हम लोग को नहीं दे रहा है. बट आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं और हम ग्लेनलिवेट के ऊपर आपके नाम का स्टिकर डाल सकते हैं. बट अभी के लिए नहीं, अभी के लिए. ये कलर भी तो मतलब कुछ लग रहा है, मतलब कुछ सिटी विटी का कुछ मतलब इन्फ्लुएंस वगैरह कुछ है क्या? ये स्टोरी आगे के हमारे पॉडकास्ट में रिवील किया जाएगा कि ये क्यों, हाउ इट इज, व्हाई इट इज, एंड देन व्हेन विल इट वन डे ओपन, एंड ये कब किया जाएगा. इस सब का स्टोरी देखने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड टू देसी फुटबॉल बैंटर. बट आज के लिए जस्ट मार्वल. 1824 गाइस, ड्यूटी नॉट पेड. इसमें कुछ लड़की का कनेक्शन है क्या? लड़की देखते हैं. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर. ये कलेक्शन आप सब कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि कमेंट्स में बताइए आपको लगता है कि गम वाला ड्रिंक है क्या? अभी ट्रॉफी कैबिनेट भरा हुआ है, लेकिन ये कैबिनेट खाली है. प्लीज अच्छा, अरे नाइस वन. तो बेसिकली क्या होने वाला है, तो दिस टीम्स विल बी पिट अगेंस्ट दिस अनसीडेड टीम्स इन द नेक्स्ट ड्रॉ, इजंट इट? वो ड्रॉ आई थिंक नेक्स्ट वीक को ही है. Yeah, I think you should have just prayed for United to get through. United finished last in Group A after 4 defeats from their 6 group matches. So the 6th time. I think with United, the big thing was Onana single-handedly costed them this campaign actually. अबे ओनाना लास्ट ईयर फिनिश किया था इन फाइनल यार, उसको उसीलिए यूनाइटेड खरीदा. Yeah, वही तो आयरनी है, because वो जो गैलाटासराय के अगेंस्ट ही जस्ट गेव देम दो गोल दे दिया, and they are out of Europe, मतलब यूरोपा भी नहीं. out of. I'm the one who let the team down. And Sevilla नहीं कर पाया यार. ठीक है, तो they are not in a very good vein of form at the moment. Next वाला ग्रुप में मैड्रिड, सारे के सारे मैचेस मैड्रिड won यार. 6 out of 6, 18 points. तो टीम टू बीट है ना इस बार टीम टू बीट ना चैंपियंस लीग में. Yeah, I think a large part of it is due to Napoli's dip in form. So like they are nowhere near to what they were last year itself. Like last year they won Serie A by like 90 points. The next club came in 25 points almost adrift from them. तो वो gulf in quality था. But this time you watch their matches, Napoli वैसा खेल ही नहीं रहा. मतलब Osimhen is such a like a gem of a striker, but and so were the others who were there in the team, building the game. मतलब उनका मेन 2-3 क्रूशियल प्लेयर्स थे लॉस्ट ना. एक था वो डिफेंडर हु वेंट टू बायर्न, वो क्या नाम था उसका, किम मिन जे. एंड आई हैड हाई होप्स फ्रॉम यूनियन बर्लिन यार. मतलब अच्छा टीम था. दे परचेज्ड प्लेयर्स लाइक इसको नहीं था, सॉरी नॉट इसको, इट वाज बोनुची को लिए थे. एंड एक अच्छा टीम असेंबल किए थे यार लास्ट ईयर भी. एंड ग्रुप डी में सोसिएडाड एंड इंटर मिलान, वेल नो सरप्राइजेस थे. बेंफिका ओनली 1 point यार, मतलब आउट ऑफ 6 games. मतलब इतना खराब टीम हो गया बेंफिका. No, I'm surprised at that. है ना, मतलब they have good players like राफा है और डी मारिया है. बिग अप टू कीरन टियर्नी हु इज ऑन लोन एट सोसिएडाड. अच्छा करे, मतलब आई होप कि सोसिएडाड अच्छा करे.
And the next group is जब भी लेफ्ट बैक से गोल खाता है आर्सेनल, आई रिमेंबर करंट मेरे को इसलिए जिनचेंको का मतलब मेरे को 50-50 लगता है, मेरे को इतना पसंद नहीं आता है वो. एंड गैब्रियल उसका जॉब भी करता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ही डज द जॉब ऑफ द लेफ्ट बैक एंड द सेंटर बैक एज वेल. इसीलिए मेरे को सलीबा के से ज़्यादा बेटर लगता है गैब्रियल. ये वाले ग्रुप में एथलेटिको 14 पॉइंट्स लीड, नो सरप्राइजेस थे. लाजियो 10 पॉइंट्स, फेयरनूड एंड सेल्टिक. ये तो पता ही था ऐसा ही होने वाला है, समथिंग लाइक दिस इजंट इट. मैं ये वो ग्रुप को हमने ज्यादा टाइम नहीं दिया गाइस. हाँ सॉरी, इतना इस पे ज्यादा अभी माता नहीं. ये ग्रुप में कोई था ही नहीं टाइम देने लायक. ये वाला सही ग्रुप था, है ना. ये वाला बहुत तगड़ा ग्रुप. ये वाले पे पॉडकास्ट हो सकता है इसी ग्रुप पे. आई एक्चुअली हैड हाई होप्स फॉर न्यूकैसल. मेरे को चाहिए था कि वो जाए मतलब नॉकआउट्स में, एंड आई वांटेड टू सी कि वो कैसे करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. बट जब द वे दे डिफीटेड पीएसजी एट होम 4-1 ऐसा कुछ, मैं तो पूरा उस दिन पूरा हिल गया था. मतलब भाई सही है यार न्यूकैसल, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट मेंट टू बी. एंड मिलान भी कल उनको हराए 1-0 at St. James's Park, finished on 8 points, but PSG scraped through. Dortmund 11 points जाके करेगा भी क्या Dortmund वहाँ पे जाके? They reach round of 16 every time. They are like, in Champions League. They are like the Arsenal of Germany, isn't it? मतलब वो जाके वहाँ पे knockout से निकलते हैं. So you want the draw to be such that Arsenal faces Dortmund next? One PSG and Dortmund, I prefer Dortmund. But your better place to beat PSG. Oh, I don't know, man. नहीं. PSG is not playing well, man. अरे भाई स्टिल PSG उनका मैनेजर पता नहीं कभी भी कुछ भी कर सकता है. लुइस एनरिके है ना उनका मैनेजर अभी. कोलोमुआनी, असेंसियो, अरे हैं तगड़े प्लेयर्स हैं यार. Mbappe is like, he's very good. उस्मान डेम्बेले भी है, करेक्ट. But very good player. ये वाला में सिटी एंड लाइप्जिग, अगेन नो सरप्राइजेस. 6 out of 6 wins फॉर सिटी. 18 पॉइंट्स, मतलब ऐसे ही उनका मतलब BAU एक्टिविटी है सिटी का ये. तो ये वाला में बार्सिलोना, पोर्तो 12 पॉइंट्स ईच. तो ये रहे हम लोग के टीम्स, ठीक है. बट सारे ग्रुप देख के ये लग रहा है, एक्सेप्ट वो जो न्यूकासल वाला ग्रुप, इट लुक्स नॉर्मल कि 2 स्ट्रॉन्ग टीम है एंड 2, बट न्यूकासल दे शुड हैव टेकन 2 टीम्स फ्रॉम देयर एंड दूसरे ग्रुप में डाल देते, बिकॉज़ दैट ग्रुप लुक्स टू टफ, वेरी टफ ग्रुप. मेरे को लेकिन ये हजम नहीं हुआ यार. कोपेनहेगन मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 4th फिनिश करेगा करके. Yeah, that's true. You saw that match, right? Which United lost to Copenhagen. You saw that match? नहीं, no, मैं एक्चुअली हाइलाइट्स कर देगा. But I know they were leading and then they got a red card, right? We had to pull in किशोर भाई because यूनाइटेड फैन है एंड यूनाइटेड ने इतना अच्छा किया इस बार तो चैंपियंस लीग में, तो वी हैड टू ब्रिंग हिम इन. तो किशोर भाई क्या हुआ क्या आप बताओ मेरे को, मतलब व्हाट हैपेंड विद यूनाइटेड. मतलब ऐसा मतलब 4 पॉइंट्स बस खाली यार ग्रुप स्टेज में. क्या हुआ आपका परम्यूटेशन, वो कॉम्बिनेशन. मतलब यार मैं इतना एक्चुअली खुद रात में बैठ के देखा कि हाउ विल यूनाइटेड क्वालिफाई, हाउ कैन दे गो ऑन लाइक 1 सेकंड. ये मतलब for United to actually qualify, they needed to win the home match and they needed Copenhagen to also win, है ना, या draw. Anyone winning, Copenhagen or Galatasaray, we were out. So it was just a hopeful match. Firstly, we had to win Bayern. That was punching above our weight. Firstly, we had to win that and then hope that there's a draw. Either one of them, Galatasaray won, they would go above United even if we had won. So I feel that United are very considerate for their fans, that they lost themselves so that it's finished, that there's nothing to What the fuck? expectation to kuch nahi tha from the match. From very critical, if you have to evaluate critically, I was not hoping. I was, on the other hand, I was hoping that Bayern would thrash us 3-0 or something. But from that perspective, we were decent enough. And I thought Tuchel would not actually put their A team and all. Everybody was there, man. Kane was there, Sane was there, Musiala is there, Kimmich is there. I like, what the hell? You have already qualified. Why do you need all these people? You just rest them, man. But he had got the best team, and then I think pretty decent. From that perspective, it's pretty decent. From a Champions League perspective, I think we were cursed this season because we scored so. But आप लोग थर्ड भी फिनिश नहीं कर पाए यार. यू फिनिश्ड 4th. थर्ड में करते तो एटलीस्ट यूरोपा में जाते. I know. Good. Thank God we are not in Europa. It's okay. Now we can focus only on EPL. Top four. Now, So Kishore, when you say you were cursed, is that curse called Onana? Oh. गजब बेइज्जती है. अरे किशोर भाई, you went from there to there.
so fitting मतलब टॉप से फर्स्ट से हाँ, top से bottom. We have our correspondent Kishore joining us live from Manchester from Old Trafford. I think our focus should be on EPL and only EPL. There are now talks that what's that guy's Chelsea's previous the Brighton manager was Chelsea. Graham Potter. What? I think उसका नाम आ रहा है अलग है यार नहीं चाहिए मुझे. He would do well actually. He would do well. He's good for a mid-table वाला team. So that's why I said. So you're suggesting United is mid-table league? Stop it. Get some help. इससे पहले वाले वीक में like Kishore was like all into and saying कि we must do a session like calculate how United will get in, and he had that optimism and hope there. But United just couldn't stand up to live up to him. And before you answer, Kishore, please one section about Onana, because I feel he was instrumental. There were games you were leading. He single-handedly cost you the Champions League because his form improved in Premier League and it reflects in Premier League. Champions League, I feel he costed you. And he was bought for Champions League. He was bought for Champions League because I think last season he was there in the finals, right? He was in the He was there final. in the finals. Idiot. It's a Champions League campaign that we want to forget, and hopefully a win over Liverpool can actually salvage. ये this weekend one है ना for, match with Liverpool? Yeah, we can. Yeah. सही है यार. And we are playing away. We're going there. If you lose big to Liverpool, like last season, it was very big. Will you say Ten Hag out? Will you say this is I enough? think halftime itself they should announce it if that happens. चलो जाके इलाज कराओ. United's home losses, I think, was 34 in Ferguson era, and abhi ye last 7 years mein that record is gone. Are you sure it's not in last 2 years? No. 7 years, huh? Okay, so very quickly, Champions League में who are the favorites to lift the title this year? मतलब 18 points में finish किए हैं 2 teams so far ग्रुप्स में. आई थिंक इट इज सिटी एंड मैड्रिड. एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है, दूसरा इज तो मैड्रिड. वी नो व्हाट मैड्रिड इज कैपेबल ऑफ. चैंपियंस लीग में फोड़ते ही हैं, है ना? दैट्स अ टीम. तो ये दो टीम तो है मेरे लिए, एंड आई वुड वांट टू अवॉइड बेयर्न एज वेल एज अ, है ना? तो दीज 3 टीम्स मेरे लिए टॉप 3 में तो रहेंगे ही, है ना? और आपको कोई लगता है क्या कि मतलब कौन फेवरेट्स है इस साल, और इज एनी टीम लुकिंग गुड अकॉर्डिंग टू यू? एथलेटिको या डॉर्टमंड या पीएसजी या इंटर? I mean, why are we forgetting Arsenal? Arsenal are not the favorites. So I would not the favorites. विवेक मन कर रहा है कि आर्सेनल ही बोलूं, लेकिन ऐसे ओपनली नहीं बोलूं. First season back in UCL after like 8 odd years के आसपास. तो I think Bayern, City, Real Madrid. I think Atletico Madrid as well. They looked really good. Barcelona looked very, very shaky. So Barcelona, I don't think so we can consider them. They lost yesterday, and I think the previous game also they played against Girona. I think they're currently leading La Liga. Lost to Girona at home. So these are not traits of a team that is favorites of winning the Champions League. But I don't think so. They'll surprise also. I don't think they're going to be surprised. I think there's a lot of vacuum. I don't know. Is it the midfield? Is it Lewandowski? I think once in 2 matches he scores. I mean, it doesn't look like a possibility. They have big match players ना, तो वो लोग मतलब शायद लीग में इतना अच्छा ना कर पाए, बट नॉकआउट्स में शायद क्लिक कर जाए. You never know ना. मतलब लेवेंडोस्की है, गुंडोगन है, and Rafinha. 100%. But नॉकआउट्स ना, मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है. Then with that argument, Arsenal भी जीत सकता है. Fingers crossed. तो सब बोल रहे हैं सिटी एंड मैड्रिड बेसिकली फेवरेट्स, एंड बेयर्न आल्सो इज अप देयर, इजंट इट? ये तीन है डेफिनेटली स्ट्रांग, मतलब सुपर स्ट्रांग. मतलब नेक्स्ट में आते हैं एथलेटिको, बार्सिलोना, एंड उसमें भी अगर टियर करना है, फर्स्ट मैड्रिड, सेकंड सिटी, थर्ड बायर्न. I think it's Kane's season. He's going to get the Champions League this time. नहीं यार, he missed it. नहीं, he will. I think the team अगर जीतता भी है good. तो वो मैच में इंजर्ड रहेगा फाइनल में. मुझे वो चाहिए. That's okay, but I think the team looks really good. Bayern looks really good, and they played against good teams. I think not United. Okay, fine. They played against. तो इसी के साथ we have reached the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज हम लोग को कमेंट्स में बताओ कि आप लोग को क्या लगता है, who is the favorites this year to win the Champions League? Madrid or is it Arsenal? पैसा लगाओ आर्सेनल पे, जीतेगा पक्का, अच्छा करेगा. बॉलीवुड में वो घंटा अवार्ड्स करके कुछ था. I think they gave it to a couple of them. Ghanta award for keeper, you should give it to Onana.
Seriously. I think you should call it Onana Award. They won't give it to Onana. I don't want to do that. Yeah, I think Then we'll be cursed for the entire season. Onana is the first time winner of the first time award. Onana Award.